Am I audible? My voice is clear to you? Yes, ma'am. Okay. So today we will start transportation problems. It's a type of problem, linear programming problem, which can also be solved using the regular simplex method. But in general, you see that transportation problems are the problems in which we have to transport the commodities in such a way such that the transportation cost will be minimum. Okay. So means we have a source and destination. Suppose number of sources here. Say source और यहाँ से destination. तो commodities को transport करना है so that in such a way that transportation cost will be minimum. तो sources कैसे हो सकता है? It may be the warehouses और destination it may be type of shopping malls. तो warehouse से shopping malls तक आपको suppose commodities transfer करनी है और किस तरीके से transport करनी है कि उनकी जो transportation time है, cost है, that should be minimum. So that types of problems comes under the transportation problems. And in practical scenario, it may cover the area, the problems that covers the area of inventory control, employment scheduling, and many other types. So we will see that the methods for solving the transportation problems here, although these problems can be solved using the regular simplex method also. Right. So before proceeding, I'm going to discuss some definitions, some important definitions here, in which the first one is the feasible solution. ये हमने सिंप्लेक्स में भी पढ़ा था पहले. feasible solution क्या होता है? कोई भी प्रॉब्लम अगर मुझे दे रखी है तो feasible solution एक ऐसा सेट नॉन नेगेटिव वैल्यूज का that satisfies the constants, right? So we say that a set of non-negative values means positive values. Non-negative values among these the variables are given. अगर यहाँ पर x i j ये दे रखा है 1 to m and j is equals to 1 to n. So a set of non-negative values xij that satisfies constants are called the feasible solution. That satisfies constants. These definition must be clear because ये हम बार-बार ये terms use करेंगे कि basic feasible solution क्या होता है, optimal solution क्या होता है. तो ये सारी चीजें थोड़े clear होना चाहिए. So next thing is what is the basic feasible solution here? Basic feasible solution. Transportation problem में suppose मेरे पास कोई प्रॉब्लम दे रखी है m क्रॉस n प्रॉब्लम, ठीक है. So feasible solution, basic feasible solution which does not contain more than m plus n minus 1 allocations. एक ऐसा solution, basic feasible solution एक ऐसा solution होगा which contains no more than m plus n minus 1
non-negative allocations. We can write as a feasible solution that contains no more than m plus n minus 1 allocations. It will be more clear जब हम अभी आगे प्रॉब्लम्स करेंगे तो उससे और क्लियर हो जाएगा कि कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है, कौन सा बेसिक नहीं है. Now the basic feasible solution further classified as a degenerate and the non-degenerate basic feasible solution. This is a degenerate basic feasible solution and non-degenerate. ये हमने पहले भी स्टडी करा था. अभी ट्रांसपोर्टेशन में हम कैसे चेक करेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ. तो कोई भी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन डीजेनरेट होगा अगर उसकी जो एलोकेशंस हैं विच आर लेस देन m plus n minus 1 एलोकेशन. जितनी भी एलोकेशंस हुई हैं वो m plus n minus 1 से लेस देन होनी चाहिए, कम होनी चाहिए. m plus n minus 1 नॉन नेगेटिव, लेस देन m plus n minus 1 नॉन नेगेटिव एलोकेशंस. और डीजेनरेट होगा इफ इट हैज एग्जैक्टली m plus n minus 1 non-negative allocations. So this is the difference between the degenerate and the non-degenerate basic feasible solutions. First thing is basic feasible solution कब होगा? एक ऐसा feasible solution which have not more than m plus n minus 1 non-negative allocations. So if it has less than m plus n minus 1 allocations, then the solution is degenerate basic feasible solution. And if it has exactly m plus n minus 1 allocation, then our solution is non-degenerate basic feasible solution. Next thing is optimal solution. Optimal solution means this is again the simple thing which minimize the total transportation cost, because हम यहाँ पे transportation की बात कर रहे हैं. तो एक ऐसा solution जो मेरे transportation cost को minimum कर दे, ऐसे solution को हम optimal solution कहते हैं. तो feasible solution जरूरी नहीं है कि वो basic भी हो, not necessarily basic. Not necessarily basic is optimal if it minimizes total transportation cost. If it minimizes total transportation cost. Now next thing is what is the balanced problem and what is unbalanced problem. It's same like as in the assignment problem. Assignment problem is basically a special case for the transportation problem. So अगर मैं balanced और unbalanced की बात करती हूँ, it means अगर sources and destinations मेरे equal हैं तो problem कैसी है? Balanced है. अगर वो equal नहीं है तो वो problem कैसी हो जाएगी? Unbalanced हो जाएगी. Means total supply from the sources equal to total demand at the destination. We can say for the balanced type of transportation problem. Balanced transportation problem means we can write as summation ai will be equals to summation of bj. I equals to 1 to n and j is equals to 1 to m. Means we say that the sources, total supply from the sources, यहाँ से जो इसकी supply है वो destination के बराबर आ रही है. और अनबैलेंस्ड में ये क्या होगा? अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मींस जहाँ पे ये इक्वल नहीं होंगे. तो उसमें भी हम क्या करेंगे, जैसे कि असाइनमेंट प्रॉब्लम में करा था, वी हैव एडेड सम डमी कॉलम, डमी सोर्स और डमी डेस्टिनेशन इन द प्रॉब्लम एंड देन कन्वर्टेड अवर अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम इनटू द बैलेंस्ड प्रॉब्लम. तो जब भी अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम हमें गिवन है तो सबसे पहले मुझे उस अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम को बैलेंस्ड प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा सॉल्व करने के लिए. इज दिस क्लियर?
Is this okay? These definitions are clear to you? Yes, any problem in these basic definitions? No, ma'am. Okay, so let's proceed the method for solving the transportation problems. So solution of transportation problem में हमें क्या होगा? It may involve like एक मॉडल दिया हुआ है ट्रांसपोर्टेशन मॉडल विच इज गिवन इन द मैट्रिक्स फॉर्म. तो हमें उसके लिए फिजिबल सॉल्यूशन इवेल्युएट करवा सकते हैं या फिर हमें उसके लिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन मैंने बताया जो कि एक ऐसा फिजिबल सॉल्यूशन जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमम करता है. तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए एक ऑप्टिमलिटी टेस्ट होता है यहाँ पर, ठीक है, कि पर्टिकुलर किसी प्रॉब्लम का वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी कर रहा है नहीं आ रहा है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे. पहले हम देख रहे हैं कि बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कैसे इवेल्युएट होगा. ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे टोटल 4 या 5 मेथड्स हैं. आई एम गोइंग टू टेक द फर्स्ट मेथड which is north west corner rule or stepping stone method for finding the initial basic feasible solution. इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन. तो इसके लिए हम जो यहाँ पर मेथड स्टडी करेंगे, द फर्स्ट वन इज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल और इसको बोलते हैं स्टेपिंग स्टोन मेथड भी इसको बोलते हैं. स्टेपिंग स्टोन मेथड. Second method is row minima method. Row minima method. Third one is column minima method. Fourth is lowest cost entry method. And fifth one is Vogel's approximation method. और इस वाले मेथड को पेनल्टी मेथड भी बोलते हैं. तो दिस मेथड इज द बेस्ट अमंग ऑल द मेथड्स. तो अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपको बाय नेम पूछा जा रहा है तो आपको उसी मेथड को अप्लाई करना है. इफ इट्स नॉट मेंशन्ड देन गो फॉर द Vogel's approximation method because it gives the best solution, right? So I'm going to start with the stepping stone method or the northwest corner rule for evaluating the initial basic feasible solution. सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, find the initial basic feasible solution. Find the initial basic feasible solution of the following.
the following. Transportation problem. Using northwest corner rule. And our transportation problem here is ये दिया हुआ है मेरे को we have warehouses, four warehouses are given: W1, W2, W3, W4, and these are warehouses, and three factories are there. F1, F2, F3. So it's given in the problem. And factory capacity, so 7, 9, and 18. And this is warehouse requirement. Warehouse requirement 5, 8, 7, and 4. So it's 19, 30, 50, and 10, 70, 30, 40, 60, 48, 70, 20. So this is my question. Okay. वेयरहाउस की रिक्वायरमेंट गिवन है, फैक्ट्री की कैपेसिटी दे रखी है, और मुझे इसका इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है यूजिंग द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल. तो हम नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर जो एलोकेशंस करेंगे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हियर. ओके, तो सबसे पहले यू सी दैट द फैक्ट्री कैपेसिटी हियर इज 7 बट द रिक्वायरमेंट इज 5. तो हम कितना एलोकेट कर सकते हैं इस पर? कितना एलोकेशन हो सकता है? फैक्ट्री की कैपेसिटी तो 7 है बट रिक्वायरमेंट हमारे पास 5 की ही है. सो हाउ मच वी कैन एलोकेट स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट? कितना एलोकेशन होगा? मैक्सिमम कितना? क्यों? 5 की रिक्वायरमेंट है ना, तो 2 कैसे होगा? 5 तो हम एलोकेट कर ही सकते हैं ना, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी. तो कैपेसिटी तो है 7 तक देने की बट रिक्वायरमेंट इज 5. इज ओके?
रिक्वायरमेंट अगर यहाँ पर मेरे पास 2 की होती तो मैं 2 लेती, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना तो मैं एलोकेशन लूंगी ना। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में स्टार्टिंग द एलोकेशन फ्रॉम द नॉर्थ डायरेक्शन एंड देन एलोकेट अकॉर्डिंगली। अब आप देख रहे हो यहाँ पर मेरी जो रिक्वायरमेंट है इट्स ओवर, 5 कंप्लीट हो चुका है, तो अभी यहाँ पर कहीं और एलोकेशन नहीं होगा। नेक्स्ट, नाउ रिमेनिंग कैपेसिटी यहाँ पर जो मेरे पास बची है वो कितनी बची हुई है, 5 मैंने यहाँ पर एलोकेट कर दी इस कैपेसिटी। F1 की जो कैपेसिटी थी वो 7 थी और 7 में से मैंने 5 एलोकेट कर दिया, रिमेनिंग एलोकेशन हियर इज 2। नाउ कैपेसिटी ऑफ F1 इज कंप्लीटेड हियर। अगेन I'm seeing that कैपेसिटी ऑफ F2 इज 9। तो 9 हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है 70 पे, बिकॉज ये एलोकेशन मेरी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट मुझे जो एलोकेशन है वो मुझे 30 पर एलोकेट करना है। 30 पर मैं कितना एलोकेट कर सकती हूँ, द वेयर हाउस रिक्वायरमेंट हियर इज 8। 8 में से मैंने 2 ऑलरेडी एलोकेट कर दिया है, तो अब कितना एलोकेशन हो सकता है, कितना एलोकेट कर सकते हैं हम। You just have to check the capacity and the requirement कि कैपेसिटी कितनी है देने की और रिक्वायरमेंट कितनी है। तो यहाँ पर अब हमारा कितना एलोकेट होगा बताओ। कैपेसिटी तो 9 की है बट जरूरत कितने की है, टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ W2 इज 8। 8 में से 2 ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है, ठीक है। तो मेरे पास अब कितना और बचा है, यहाँ पे कितना और एलोकेट कर सकती हूँ। My voice is clear to you? $51. What is 51? वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? यस मैम। यस मैम। कितना एलोकेट करेंगे हम यहाँ पर? मैम 6। मैम 6। 6, क्योंकि टोटल रिक्वायरमेंट 8 की है। नाउ इट्स कंप्लीटेड, रिमेनिंग इज 6 एलोकेट हो चुका है, स्टिल द फैक्ट्री कैपेसिटी इज रिमेनिंग। फैक्ट्री कैपेसिटी मेरे पास यहाँ पे अभी 3 और बची हुई है, तो मैं 3 क्या करूंगी, आई एम गोइंग टू एलोकेट 3 ऑन 40। नाउ फैक्ट्री कैपेसिटी इज कंप्लीटेड फॉर फैक्ट्री सेकेंड। नाउ कम टू फैक्ट्री नंबर थर्ड। फैक्ट्री नंबर थर्ड में द फैक्ट्री कैपेसिटी इज 18। यहाँ पर एलोकेशन कंप्लीट हो चुका है 5, इसमें भी कंप्लीट हो चुका है रिक्वायरमेंट 8 की। यहाँ पर अब थर्ड आप कॉलम में देखोगे तो हमारे पास रिक्वायरमेंट है 7 की और 3 एलोकेट हो चुका है। तो यहाँ पर अब मेरा रिमेनिंग बचता है, कितना बचता है, 4। Now it's completed and the remaining is 14 which is allocate on 20. So this is the northwest rule जिसमें हम स्टार्ट करेंगे, और ये इसको स्टैपिंग स्टोन इसलिए कहा गया है। देखो अब मैं इसके एक और मैट्रिक्स यहाँ पर लिख रही हूँ फाइनल। ठीक है, तो फर्स्ट एलोकेशन हुआ 15 और 9, सेकेंड एलोकेशन 2 30, देन 6 30 पर हुआ है, आफ्टर दैट 3 40, देन 4 70 एंड 14 20। तो आप यहाँ पर इसको देखोगे, ये एक ऐसे यहाँ पर एक स्टेपिंग स्टोन
इस तरीके से बन गया. That's why the method is also the stepping stone and the northwest corner rule. Now you find out the total cost. Total cost is equals to 5 into 19 plus 2 into 30, 6 into 30, 3 into 40 plus 4 into 70 plus 14 into 18 is equals to 1015. So this is northwest corner rule. और इसी सेम प्रॉब्लम को हम आगे जो मेथड्स हैं, वेदर इट्स रो मिनिमा, कॉलम मिनिमा, बॉगल्स अप्रोक्सीमेशन, हम सभी तरीके से इस वाले मेथड से कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे कि कौन से मेथड से कॉस्ट हमें मिनिमम आ रही है. So this method is the northwest corner rule, जहाँ पे हमने नॉर्थ से स्टार्ट एलोकेशन करा है एंड एलोकेशन एलोकेट करते जा रहे हैं, जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हम एलोकेट करते जा रहे हैं. Next method is the same problem we are going to solve using row minimum. Yes. 14 into 20 आएगा ना? 14 into 20. Fine. ठीक है. 14 into 20. Yes. So इसी प्रॉब्लम को अब हम करेंगे रो मिनिमा मेथड. रो मिनिमा एज द नेम इंडिकेट्स कि हमें फर्स्ट एलोकेशन कहाँ पे करनी है, जो रो में मिनिमम एलिमेंट है. अभी तो हमने एलोकेशन करा था, यहाँ पर हमने कुछ भी चेक नहीं करा, जो फर्स्ट एलिमेंट था वहां पर हमने एलोकेट कर दिया था. रो मिनिमम हम क्या करेंगे, इस रो में देखेंगे, इस रो में मेरे पास 10 मिनिमम है, तो सबसे पहले मैं एलोकेशन करूंगी 10 पे. ठीक है. उसके बाद मैं फिर दूसरी रो देखूंगी, उसमें कितना मिनिमम है, फिर मैं उस पर एलोकेट करूंगी. इस तरीके से हम रो मिनिमम में एलोकेशन करेंगे. सेम मेथड कॉलम मिनिमम में कॉलम वाइज एलोकेट करेंगे. राइट. तो अभी इस प्रॉब्लम को हम कर रहे हैं रो मिनिमम मेथड से. The same problem with row minimum. ये क्वेश्चन है हमारे पास 19, 30, 50, 10 and 70, 30, 40, 60, 48, 70, 20, and here we have factory capacity and warehouse requirements, which is given 5, 8, 7 and 14, and factory capacity here is 7, 9, 18. So start the allocation with the first row, and first you have to choose the minimum among 19, 30, 50 and 10. So which is minimum? 10 is minimum. So I am going to allocate. First allocation is made in सेल 1-4, मतलब इस पर हम एलोकेट करेंगे. तो 10 पर एलोकेट करने के लिए फैक्ट्री कैपेसिटी 7 है एंड द रिक्वायरमेंट हियर इज 14. तो हम कितना एलोकेट कर सकते हैं, यहाँ पर कितना एलोकेट कर सकते हैं? 7 के 7 एलोकेशन पॉसिबल है, बिकॉज रिक्वायरमेंट तो ज्यादा है और कैपेसिटी हमारे पास कम है. तो मैं यहाँ पर 7 एलोकेट कर सकती हूँ. यहाँ पे अब एलोकेशन मेरी बच गई है 0 और यहाँ पर मेरे पास अभी बचा हुआ है 7. इज दिस ओके? इज दिस क्लियर? इतनी बात समझ में आई? सबसे पहले हमने क्या करा, जो हमारी रो थी, वी आर टॉकिंग अबाउट द रो मिनिमा मेथड. तो उस रो में जो सबसे मिनिमम एलिमेंट था उस पर मुझे एलोकेशंस करनी है. नाउ एलोकेशंस के लिए मैं देखूंगी कि मेरे पास कैपेसिटी कितनी है और मुझे रिक्वायरमेंट कितनी है.
कैपेसिटी मेरे पास यहाँ पे 7 एलोकेशंस की है एंड द रिक्वायरमेंट हियर इज 14। तो मैं यहाँ पर 7 एलोकेट कर देती हूँ, तो रिक्वायरमेंट अब मेरे पास यहाँ पर बची हुई है 7 की। इज दिस ओके? इज दिस क्लियर टू हो? इसके बाद इस वाली रो में अब मुझे कोई और एलोकेशंस नहीं करना है बिकॉज मेरी यहाँ पर कैपेसिटी हो गई है कंप्लीटेड। इज दिस ओके? यस और नो? Yes, ma'am. नाउ कम टू द सेकंड रो। सेकंड रो में अब मैं मिनिमम एलिमेंट देख रही हूँ। मिनिमम सेकंड रो में जो मेरे पास है वो 30 है, तो मुझे 30 पर एलोकेशंस करनी है। अगेन 30 पर एलोकेशंस करने के लिए फैक्ट्री कैपेसिटी इज 9 हियर एंड द फैक्ट्री वेयर हाउस रिक्वायरमेंट इज 8। तो मैं यहाँ पर कितना एलोकेट कर सकती हूँ? आई कैन एलोकेट ओनली 8 हियर। नाउ दिस इज 0। ठीक है, 8 का 8 पूरा एलोकेट हो गया है और यहाँ पर मेरे पास बच रहा है अभी 30 के बाद नेक्स्ट जो मेरे पास है इस रो में 40 है, तो 1 मैं एलोकेट करूंगी 40 पर। दिस इज 0 नाउ। इज दिस ओके? नाउ कट डाउन दिस। नाउ कम टू द थर्ड रो। थर्ड रो में अब मैं देखूंगी यहाँ पे 40, 70 एंड 20। फॉर 20 पर मैं कितना एलोकेट कर सकती हूँ? आई कैन एलोकेट 20 पर मैं कितना एलोकेट कर सकती हूँ? 18 में से रिक्वायरमेंट ओनली इज 7, तो 7 मैंने 20 पे एलोकेट करा। ठीक है, दिस इज 0 नाउ। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज 40 पे मैं कितना एलोकेट कर सकती हूँ? 5, बिकॉज 5 इज द रिक्वायरमेंट हियर। नाउ 7 and 5 13 and the remaining here is 1 already allocated है, I can allocate 6 here. तो दिस इज द रो मिनिमम मेथड। मिनिमम वैल्यू हमें रो में ले देखनी है कि कौन सी और उसके अकॉर्डिंग मेरे को एलोकेशंस यहाँ पर करना है। नाउ यू फाइंड आउट द कॉस्ट यूजिंग दिस रो मिनिमा। जो जो एलोकेशंस करी है मैंने, तो टोटल कॉस्ट यहाँ पर होगी फर्स्ट रो में जो एलोकेशन है 7 into 10 plus 8 into 30 plus 1 into 40. In the third row 5 into 40 plus 6 into 70 plus 7 into 20 and evaluate it, you will get rupees 1110. तो पहले वाले मेथड से जो मेरे कॉस्ट निकल कर आया था वो आया था 1015। रो मिनिमा से जो वैल्यू निकल कर आई है वो आई है 1110। द सेम मेथड इज एप्लीकेबल ऑन द कॉलम मिनिमा मेथड। कॉलम मिनिमा में यही इसी प्रोसीजर को मुझे अडॉप्ट करना है। अब मैं कॉलम वाइज मिनिमम एलिमेंट देखूंगी और उस पर एलोकेशंस करूंगी। तो यहाँ पर अगर आप कॉलम वाइज देखो तो मिनिमम एलिमेंट 19 है, तो सबसे पहला एलोकेशन 19 पर होगा, विच कैन बी 5 क्योंकि 5 की रिक्वायरमेंट है और 7 यहाँ पर कैपेसिटी है। तो सेम प्रोसीजर कॉलम वाइज करना है। सो यू जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम कॉलम वाइज। ठीक है, तो दैट विल बी द कॉलम मिनिमा मेथड। इसके बाद आएगा नेक्स्ट मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। उसमें हम क्या करेंगे, जो पूरी मैट्रिक्स में स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उस पर एलोकेशन करेंगे, तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। तो यू जस्ट ट्राई सॉल्व यूजिंग column minima. ठीक है, द सेम प्रॉब्लम। नाउ किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकता है, क्लियर नहीं हो रहा है, सो यू कैन आस्क योर डाउट्स नाउ, और इज इट ओके? Please write your attendance. So is this clear or any doubt?
Yes or no? Yes, ma'am. Okay. So we'll continue row minima method in the next lecture. Row minima and the Vogel's approximation method. ठीक है, तब तक आप इस पर बेस्ड और कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करके देखो और इसको कॉलम मिनिमा मेथड से भी कर लेना. ठीक है.